नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं चेतना महाजन, जो कि प्लेस हो चुकी हैं एसेंचर में फॉर द रोल ऑफ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये अपना रिटन एज वेल एज इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। ये आपको ये बताने वाली है कि रिटन टेस्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन किन पार्ट्स पर आपको फोकस देना है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी तो रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट सेक्शन पे इनको कांग्रेचुलेशन जरूर विश कर दीजिएगा, क्योंकि ये एसेंचर के अलावा भी काफी सारी मल्टीपल कंपनीज में प्लेस हुई हैं। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। So hi Anshul, thank you for having me. It's a great pleasure. So my name is Chetna Mahajan. I am a computer science undergrad. Currently, I am in my 8th semester and doing an internship from Persistent System. Also, I got offer from Accenture for associate software engineer role. ओके, दैट्स ग्रेट चेतना। सो चेतना, सबसे पहले आगे बढ़ने पहले आप शॉर्ट में ये बताइए कि इन शॉर्ट की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, मींस कितने राउंड्स होते हैं एसेंचर में? So talking about the online test, so Accenture has only one online test, that is the online computer test, which consists of two parts: coding section and the apti section. So for apti section, I have prepared for from Tech and Target channel, because they have the playlist of quant, reasoning, and even the verbal abilities. Now talking about the coding section, so for the coding part, I think you need to be consistent with your programming skills. Also, I have done the previous year questions from the same channel, so that helped me a lot in my selection process. Now follow with the procedure. I think you have to for the beginners, I think you need to practice on a HackerRank platform, because that is good for the beginners. Now after that, you can switch to the lead code, because that has a bit complicated questions. So this was the preparation strategy. ओके चेतना, ये बताइए कि जो प्रोग्रामिंग पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट होता है, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, एंड एनी आइडिया कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस पे बेस्ड थे, टॉपिक क्या था उनका? Yes, sure. So that coding section consists of two coding questions. So one, I think I remember, one was from the arrays and another was from the stacks. So I think if you have to crack both those questions, so you need to be aware of basics of data structure, bare-bone knowledge of data structure like arrays, strings, stacks, even queues, because some of my friends got questions from queues as well. So you have to prepare the basic questions. So this was all about the coding part. ओके एंड चेतना, जो आपका एप्टीट्यूड पार्ट होता है, जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट पे, एनी आइडिया कि उस मींस उन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है आपके अकॉर्डिंग? इस बार तो डिफिकल्टी आई थिंक एसेंचर की काफी हाई थी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग भी था इसमें, और इवन द क्वांट सेक्शन वाज बिट डिफिकल्ट. सो आई थिंक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. मतलब ऐसा नहीं ले सकते कि क्वांट है या रीजनिंग है या एप्टी पार्ट है तो वो सिर्फ पासिंग या कुछ कट ऑफ पार करना है, ऐसा नहीं है. बिकॉज यू हैव टू बी गुड एट the quant part, reasoning part, and the verbal ability. And if you are solving both the coding questions, then you have more chances to get the interview call. ओके सो जितना जैसे ही आपका कोडिंग राउंड हुआ, उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन कितने दिन बाद आया कि आपका नेक्स्ट राउंड कब है और नेक्स्ट राउंड क्या था? सो सर, कोडिंग राउंड के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन 20 या 25 डेज के अराउंड आया था. और फिर वो इंटरव्यू, इट वाज अ बेसिक कम्युनिकेशन बेस्ड इंटरव्यू. सो दैट वाज द कम्युनिकेशन टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. So that was divided into subcategories, like you have to write an essay, or second part was you have to speak the statements running on a system. So they were checking your communication, how confident you are, how is your accent, how you can
I think you can write the essay on a particular topic. They have provided 2 to 3 topics, so you have to write 2 essays on that. So this was all the communication ओके। round. एंड जितना आपके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन राउंड इंपॉर्टेंट होता है या नहीं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कम्युनिकेशन राउंड का क्या करना, हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में पहुंचेंगे। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, क्या उसकी वेटेज रहती है, क्या आपके अकॉर्डिंग उसकी इंपॉर्टेंस है? So sir, I think communication round is most important for me because मेरे communication round में I faced a lot of problem because of the construction or because of the unwanted noise distraction. तो मेरा communication round थोड़ा सा बिगड़ गया था because मतलब उसमें जो warning messages आ रहे थे, and because of that I did not get the higher offer package. So I think that is more important. You have to like give the test in a isolated room because so that you don't get distracted. ओके। सो मैं आप सभी को, जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, चेतना का जो कोडिंग क्वेश्चन है वो दोनों हो गए थे। इवन हर एप्टीट्यूड पार्ट वाज बहुत ही अच्छा था, एवरेज से अच्छा था। तो देयर वाज चांसेस कि उनका 6.5 का पैकेज लग जाता, बट ड्यू टू कम्युनिकेशन राउंड, जिसके बारे में मैं आपको हर बार नोटिफिकेशन देता रहता हूँ कि कम्युनिकेशन राउंड पे इंपॉर्टेंट लो, उसकी वजह से इनका 6.5 की जगह 4.5 का पैकेज लगा था, दैट इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मेक श्योर यार आप लोग अपने कम्युनिकेशन राउंड में प्लीज जरूर ध्यान दो। तो चेतना आगे बढ़ते हैं, अब ये बताइए कम्युनिकेशन राउंड के बाद आपके पास अब फाइनल राउंड क्या था, और उसका नोटिफिकेशन आपके पास कितने टाइम बाद आया? So the final round was the interview, the main interview. So notification मेरे पास 5 दिन के अंदर आ गया था उसके बाद, और the interview was the managerial kind of interview, HR plus tech. So जब मैं इंटरव्यू में गई, they asked me to introduce myself. Also to begin with the interview, उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, बेसिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट. Also they asked me about my internship since I was doing an internship that time. After that they asked me a few of the oops concept and DBMS, like normalization and joins, the basics of DBMS. And that follows up with the HR questions, 5 to 6 HR questions. Then why Accenture, and how did you deal with the online scenario, like that, these questions. Okay, and आपका इंटरव्यू ड्यूरेशन क्या था चेतना? So my interview duration was 35 minutes. Okay, that's a long interview. Yeah. So चेतना ये बताइए, Yeah. आपका लाइक प्रोजेक्ट था, इंटर्नशिप था, आपने इतना कुछ कर रखा था, तो देयर वाज समथिंग, कोई प्रॉब्लम फेस हुई है या फिर आपने सबके आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे दिए? Sir, I have gone through your channel, Tech and Target. उसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं पहले से ही देख चुकी थी कि ना कैसे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या मतलब किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो मैं एक बार वहां पे देख लिया था मैंने, तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि हाँ ये पूछेंगे. तो उन्होंने जब भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट का दिया, और फिर उन्होंने इंटर्नशिप के बारे में मेरे से पूछा, फिर उन्होंने रिलोकेशन का क्वेश्चन पूछा. तो सेम क्वेश्चंस मैंने आपके वीडियो में भी देखे थे, so that helped me a lot. Okay, that's great. I'm glad to hear that my channel has helped you a lot. So moving ahead चेतना, तो आपके इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने टाइम बाद नोटिफिकेशन आया आपका रिजल्ट का कि लाइक यू आर सिलेक्टेड? Sir, after 5 days, because it was the on campus, so after 5 days I got the offer letter. So they have provided the offer letter to accept that. Yeah. Okay, that's great. So Chetna, first of all, congratulations as engineer for the first of associate software engineer selected. So अब चेतना वीडियो को एंड करने से पहले बस मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फ्रेशर्स की हायरिंग स्टार्ट हो गई है एसेंचर में. सो एनी टिप्स एंड सजेशन लाइक फ्रेशर्स को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए एंड फ्रॉम वेयर, और उनको कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए एसेंचर के लिए इफ दे आर अप्लाइंग? Yes, so for freshers I think you have to be consistent with the coding skills, because अगर आपका online test नहीं निकलता है तो then you don't have chance for the interview as well. तो coding के लिए I will prefer कि ना आप as a beginner go with the HackerRank platform, and then after that you can switch with the lead code.
And I think for the coding part, you have to be good at data structure, basics of data structure. Like for cracking Accenture and such companies, you have to be good at arrays, strings, linked list, stacks, and queues. That is enough. You have to practice all the basic questions of these topics, so that will help you to crack the test, I think. ओके दैट्स ग्रेट सो थैंक यू सो मच चेतना लाइक आपने अपना टाइम निकालकर इंटरव्यू एक्सपीरियंस साथ ही साथ रिटन एक्सपीरियंस शेयर किया सो थैंक यू सो मच चेतना एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर Thank you, sir. Thank you for having me. वेलकम चेतना